So let's take this particular RC assignment. So there are two RCs. Let's understand each one of them and the questions associated with them. So the first one talks about sociological understanding leads to a considerable measure of disenchantment. Disenchantment means what? Disillusionment. Disillusionment. That means कि आपने जो सोचा है वो अगर वैसा ना हो तो आपको डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है. तो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो उसके कारण हमें डिसएंचैंटमेंट हो जाता है. द डिसएंचैंटेड मैन इज अ पुअर रिस्क फॉर बोथ कंजर्वेटिव एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स. फॉर द फॉर्मर, because he does not possess the requisite amount of credibility in the ideologies of the status quo. For the latter, because he'd be skeptical about the utopian myths that invariably form the nurture of revolutionaries. So इस तरह का जो डिसएंचेंटेड मैन है, जो कि अपना विश्वास खो चुका है, ही इज अ पुअर रिस्क फॉर बोथ कंजर्वेटिव एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स. कंजर्वेटिव मूवमेंट क्या होते हैं? जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को आगे बढ़ाना चाहते हैं. एंड रेवोल्यूशनरी क्या होते हैं? जो नया चेंज लाना चाहते हैं. तो ये कह रहा है दोनों के लिए ही ये आदमी एक रिस्क है, क्योंकि ना तो वो जो करंट आइडियोलॉजीज हैं, आइडियोलॉजीज और स्टेटस को, उसमें वो बिलीव करेगा. ओके, ना ही वो जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो यूटोपियन मिथ्स प्रॉमिस करेंगे उसमें वो बिलीव करेगा. राइट. सो ही विल बी स्केप्टिकल अबाउट बोथ द आइडियोलॉजीज ऑफ द स्टेटस को एंड ऑल्सो द यूटोपियन मिथ्स दैट द रेवोल्यूशनरीज विल प्रॉमिस. Such unemployability in the cadres of either present or future regimes need not, however, leave the disenchanted man in the posture of an alienated cynicism. Alienated means isolated. Cynicism means extreme form of pessimism, where everything you see is with a negative lens. So ये कह रहा है कि ऐसा जो आप अगर एग्जिस्टिंग स्टेटस को भी बिलीव नहीं करते, फ्यूचर को रेवोल्यूशन में भी बिलीव नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक आप आइसोलेट हो जाओगे और एक आपको आइसोलेटेड सिनिसिज्म इज द ओनली ऑल्टरनेटिव. It may do that, to be sure. ऐसा हो सकता है. And we find just such postures among some young sociologists in this country who find themselves driven to radical diagnosis of the society without finding in themselves the capacity for radical political commitments. This leaves them with no place to go except for a sort of masochistic cult of debunkers who reassure each other that things could not possibly be worse. तो ये कहता है ऐसा हो सकता है कि इस तरह के जो लोग हैं वो एलियनेटेड सिनिसिज्म में चले जाएं, और जो अपने आप को किसी भी रेडिकल पॉलिटिकल कमिटमेंट में कमिट होने की कैपेसिटी ना हो जिनमें, तो उनके पास में कोई चारा नहीं बचता. वो मैसोकिस्टिक लोग कौन होते हैं? कि हु डिराइव प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन टू देमसेल्व्स. सो दीज मैसोकिस्टिक पीपल डिराइव प्लेजर फ्रॉम ब्रिंगिंग पेन टू देमसेल्व्स, इन्फ्लिक्टिंग पेन टू देमसेल्व्स. इस तरह के ये जो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स वाले लोग हैं, masochistic cult of debunkers. Debunkers means some people who challenge everything. और वो ये सोचते हैं कि things could not possibly be worse. This is the worst. So यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको हम रिकैप करते हैं. इसमें ये बताया कि सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो आप डिसएंचेंटेड हो जाओगे, और डिसएंचेंटेड आप एग्जिस्टिंग जो स्टेटस को है, आइडियोलॉजी है, कंजर्वेटिव, उनमें भी हो जाओगे, और आप जो फ्यूचर के रेवोल्यूशंस जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसमें भी हो जाओगे. तो आपके लिए फिर ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ एक आइसोलेटेड सिनिक बन के रह जाओ. और ऐसा होता भी है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं यंग सोशियोलॉजिस्ट जो इस तरीके इसमें फंस जाते हैं, और वो उनके पास में और कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट दे कीप रीएश्योरिंग ईच अदर दैट थिंग्स कुड नॉट पॉसिबली बी वर्स. दैट मींस दिस इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन. इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? सो दैट इज द वे दे रीएश्योर देमसेल्व्स. This cynical stance is in itself naive and often enough grounded more in a lack of historical perspective than anything else. Cynicism about society is not the only option besides a credulous conformity to social aeon or a credulous looking forward to the one that is to come. तो ये कह रहा है कि ये जो cynical stance है बड़ा naive है, और it is grounded more in lack of its historical perspective. Cynicism about society is not the only option. अगर आपके पास, आपको लगता है कि सिर्फ दो ही ऑप्शन है, कि या तो आप credulous conformity to this social aeon means era, ethos or age, कि एक आप credulous means you believe whatever is there in the existing era, or you believe in what is to come. So he's saying that these are not the only two options. कि हमें ऐसा लगता है कि दो ही ऑप्शन है, या तो जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसी में विश्वास कर लो, और या फिर जो आने वाला है उसमें विश्वास करके रेवोल्यूशनरी बन जाओ. तो बोलता है ऐसा नहीं है, दोनों के अलावा एक और ऑप्शन है. अनदर ऑप्शन इज व्हाट वी रिगार्ड एज द मोस्ट प्लॉजिबल वन to result from sociological understanding.
one that can combine compassion, limited commitment and a sense of comic in man's social carnival. तो अब एक और रास्ता इसने बताया है जिसमें आप compassion, limited commitment और sense of comic ला सकते हैं. This will lead to a posture vis-a-vis society based on the perception of the latter as a essentially a comedy in which men parade up and down with their gaudy costumes, change hats and titles, hit each other with the sticks they have or the ones they can persuade their fellow actors to believe. तो ये कह रहा है कि आप एक, ये जो लोग होते हैं, जो एक और जो तीसरा ऑप्शन बता रहा है ये है कि आप सोसाइटी को एक तरह से एक कॉमेडी मानो, कॉमेडी जैसा ट्रीट करो, जिसमें कि लोग ऊपर से नीचे, जैसे सर्कस में या कहीं पे आप कॉमेडी में देखते हो कि वो आ रहे हैं एक दूसरे को, उल्टे सीधे कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं उन्होंने, हैट और टाइटल चेंज करे जा रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, स्टिक्स उनके पास हो भी सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है स्टिक्स. तो इस तरह से आप एक एक सोसाइटी को एक कॉमेडी जैसे भी आप सोच सकते हो. Such a comic perspective does not overlook the fact that non-existent sticks can draw real blood, but it will not from this fact fall into the fallacy of mistaking the Potemkin village for the city of God. तो ये सेंटेंस में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कॉमिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये आपको उतनी फिर भी कैपेसिटी दे देगा कि आप, अगर आपको कोई, पोटेमकिन क्या है, okay, so let's understand what is Potemkin. Potemkin is basically some kind of a facade or some kind of a pretense that everything is well. तो एक विलेज है सपोज करो, उसमें अंदर से सब कुछ खराब है लेकिन बाहर से उसकी जो बाहरी चमक दमक है बहुत बढ़िया है अगर, ठीक है, तो उसको लोग सिटी ऑफ गॉड समझने लग जाते हैं. तो ये एक हमें बहुत सारी जगह पे इस तरह की सिचुएशन मिलती है जहाँ पे जो अंदर की कमियों को छुपाने के लिए बाहर से बड़ा अच्छा बना दिया जाता है, राइट. तो एनी काइंड ऑफ एक्सटीरियर दैट इज प्रेजेंटेड सो एज टू हाइड द डेफिशिएंसीज ऑफ व्हाट लाइज इनसाइड. सो एक पोटेमकिन, दिस वाज अ 18th सेंचुरी रशियन, वहां से ये वर्ड आया है. तो इफ यू वांट टू रीड मोर यू कैन गूगल एंड रीड मोर. तो पोटेमकिन बेसिकली इज अ टर्म दैट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ फॉल्स एक्सटीरियर that has been shown in order to hide the inefficiencies or inadequacies inside. So ये कह रहा है कि ये जो कॉमिक पर्सपेक्टिव है ये आपको इतनी तो फिर भी समझ दे देगा कि आपको अगर कोई पोटेमकिन विलेज को सिटी ऑफ गॉड बना रहा है, बता रहा है, तो आप उसको पहचान सकते, ठीक है. तो इट विल नॉट फ्रॉम दिस फैक्ट फॉल इनटू द फेलिसी ऑफ मिस्टेकिंग द पोटेमकिन विलेज फॉर सिटी ऑफ गॉड. दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ टॉक्स अबाउट द थर्ड ऑप्शन दैट इज देयर. And the third option is to consider the society as a kind of a comedy. और वो कॉमेडी में लोग इधर से उधर आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गॉडी कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं. लेकिन इस तरीके से इमेजिन करने से वो कह रहा है कि एटलीस्ट हम वी विल नॉट फॉल इनटू द फैलेसी. हम किसी पोटेमकिन विलेज को जो बताया जा रहा है उसको सिटी ऑफ गॉड नहीं मानेंगे. दैट मीन इट विल स्टिल लीव अस विद दैट काइंड ऑफ अ विजडम, ओके, और दैट काइंड ऑफ अ सेंस. If one views society as comedy, one will not hesitate to cheat, especially if by cheating one can alleviate a little pain or make life a little brighter there. तो अगर इस तरह से हम सोसाइटी को कॉमेडी समझ रहे हैं तो हम फिर थोड़ा कभी कभी चीट भी कर लेंगे, खास करके जब चीटिंग करने से हमारा कोई पेन कम हो जाए. One will refuse to take seriously the rules of the game except insofar as these rules protect real human beings and foster real human values. तो हम रूल्स ऑफ द गेम है उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, एक्सेप्ट उन रूल्स को ले लेंगे जो रियल ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट करते हैं और रियल ह्यूमन वैल्यूज को फॉस्टर करते हैं. ओके, सो ही इज सेइंग कि ठीक है आप सब कुछ कॉमेडी जैसे ट्रीट करो, लेकिन कम से कम वो जो रूल्स हैं जिसमें कि ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट, मतलब आप अपने हाथ में इस तरह से लॉ नहीं लेंगे, आप किसी ह्यूमन बींग की जान नहीं ले सकते हो. कॉमेडी में आप सोच रहे हो कि किसी को मार दो या कोई रियल ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको आप छेड़छाड़ को, वो नहीं करोगे, ठीक है. सोशियोलॉजिकल मेकियावेलियनिज्म इज दस द वेरी ऑपोजिट ऑफ सिनिकल अपॉर्चुनिटी. तो इसको नाम दिया सोशियोलॉजिकल मेकियावेलियनिज्म. ओके, it is the way in which freedom can realize itself in social action. So ये जो freedom इस तरह का है, इससे social action हो सकता है. It was Machiavelli, after all, who wrote half a millennium ago, there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success than to take the lead in the introduction of a new order of things. तो Machiavelli ही था वो जिसने ये कहा था कि हमें नया we need कि कोई भी अगर एक नया ऑर्डर लेके आना है तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई काम नहीं, ठीक. तो ये मेकियावेली बेसिकली एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, क्योंकि 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में था ये, और ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स. ओके, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ये कई जगह पे फीचर होता है इन मेनी पैसेजेस. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज.
main idea of this passage is that if you जो sociological understanding can lead one to be in a state of isolated cynicism, in the sense that you don't believe in the existing status quo, neither nor you do believe in the revolution or something that is to come. So these are not the only two states that one can fall into. तीसरा एक सजेशन दिया है ऑथर ने कि आप एक सोसाइटी को कॉमेडी जैसा ट्रीट करो, ओके, आप उसको लाइटली लो, डोंट टेक इट टू सीरियसली, ओके. सो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है, डोंट टेक इट टू सीरियसली. ओनली थिंग इज कि यस, यू शुड टेक वन थिंग सीरियसली, विच इज द रूल्स जो कि ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करते हैं और ह्यूमन वैल्यूज को फॉस्टर करते हैं, उनको आप छोड़ के बाकी चीजों को आप लाइटली लो. थोड़ा बहुत अगर चोरी वोरी करनी पड़े तो, चीट करना पड़े तो कर लो, अगर आप अपने आप का चीट, ये चोरी नहीं, चीट करना पड़े तो कर लो, इफ दैट कैन एलिविएट अ लिटिल पेन. एंड दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल मेकियावेलिनिज्म. एंड so Machiavelli had written almost half a millennium, means 500 years ago. There's nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct than to introduce a new order of things. और आज हमें एक नया order चाहिए. So that's what it is. Let's look at the passage. All of the following can be understood from the first para of the passage, except the conservative moments rely on complete belief in existing conventions. Yes, जो conservative moments होते हैं वो status quo पे believe करते हैं, existing ideologies. So status quo means existing conventions, right? So this can be understood. So this is not the answer. The revolutionary moments rely on individuals' wariness of utopian idols. Revolutionary movement rely on individuals' wariness. Wariness means fatigue. Okay. Okay, sorry. So wariness here, if you are wary, you mean, sorry, not fatigue. That was my mistake. Wary is fatigue. Okay. So wary is fatigue, and this wary means caution, cautious. Okay, circumspect. So wary here means, wariness here means your caution of utopian ideals. That means that you view utopian idols as you are skeptical, or you view them with circumspect. तो वो तो नहीं है, this is उल्टा. क्योंकि revolutionary movement जो है वो individuals your liking of utopian idols पे depend करेंगे, your attraction to utopian idols पे depend करेंगे, not on your wariness. This is exactly the opposite of what really should be. Therefore this cannot be understood. Sociological understanding may leave one with a substantial amount of cynicism. Yes, this has been given in the first paragraph. Sociological understanding may leave one with a substantial amount of cynicism. This is not the answer. Sociological understanding is likely to leave individuals too disillusioned to be of any use to present and future political movement. This also can be easily understood. Therefore, the correct answer is B, and that correct answer is B because of this particular wariness. Okay, this wariness means you being cautious or circumspect of utopian idols, which is exactly the reverse. Second question says the cynical stance mentioned in the second para refers to. Cynical stance. Cynical stance क्या था? ये जो cynical stance था, ये था कि आप basically totally society में आपका lack of optimism, right? You are totally disillusioned with the society. And जो ये यहाँ बताया, this leaves them with no place to go except to a sort of masochistic cult who reassure each other things could not possibly be worse. So complete lack of optimism about society. This first looks okay. We can keep it. The masochism prevalent among young disenchanted subjects of sociological understanding. Again, what he has done is he has taken a word for masochism from this first paragraph and mixed and tried to give a sense of some sense to this statement, but it is basically a senseless statement. There is absolutely no sense out of this. Masochism prevalent among younger disenchanted subjects of sociological understanding. So this is wrong. जो उसने masochism यूज किया था वो ये था कि एक masochistic cult है यंग लोगों की, यंग disenchanted sociologist की, जो कि हर चीज को डिबंक करते हैं and they believe that things could not be worse. तो उस context में दिया था, so this is wrong. The lack of a capacity for radical political commitments among the younger sociologists. So this is not the cynical stance. Okay, this lack of capacity for radical political commitments among the sociologists leads to this cynical stance. The cynical stance doesn't refer to this. The absence of credibility in the ideologies of the status quo, again,
This leads you to adopt this cynical stance. Cynical stance is basically your lack of optimism about society. So A is the correct answer. Sociological Machiavellianism is the opposite of cynical opportunism because the former involves cheating to meet one's own needs. Now, this is again a classic trap. Involves cheating. See, so they have written over here, right? Cheating. If one views society, one will not hesitate to cheat. So far as यहाँ तक तो ठीक है ये. Meet one's own needs नहीं है. Cheating for what? To alleviate a little pain here or there. Okay, not to meet one's needs. So ये गलत है. ठीक है. Therefore, this is not a correct answer. Involves respecting the social rules and norms which foster real human values. Yes, that's what he's saying. He one will refuse to take seriously the rules of the game. तो ये जो सोशियोलॉजिकल मेकियावेलिज्म है, ये आदमी रूल्स ऑफ द गेम को नहीं सीरियसली लेगा, एक्सेप्ट उन रूल्स को जो ह्यूमन वैल्यूज को फॉस्टर करते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ. सो सोशियोलॉजिकल मेकियावेलिज्म वाला जो आदमी है वो फॉस्टर करेगा, इस रूल्स को एक्सेप्ट करेगा. लेकिन जो सिनिक है वो तो हर रूल को ही एक्सेप्ट नहीं करता है. राइट, सिनिक डज नॉट बिलीव इन एनी ऑफ द रूल्स, वेयरएज अ सोशियोलॉजिकल मेकियावेलियन जो है वो he will respect the rules which foster human values. So this looks all right. Involves unquestioning temperament towards the status quo. This is exactly the reverse. Okay? और वो ये नहीं बोल रहा है कि, वो तो ये कह रहा है कि आप सोसाइटी को कॉमेडी जैसे व्यू करो, तो ये गलत है. Involves viewing society with a cynical perspective नहीं है, with a comical perspective. अगर यहाँ पे comical perspective होता तो करेक्ट होता है. This is also wrong. Correct is B. The author uses the analogy of man's social carnival to demonstrate that. तो social carnival उसने क्यों use किया है? There is another alternative to alienated cynicism. That's what he said. ये यहाँ पे कि another option is what we regard as one most plausible sense of comic in man's social carnival. तो आप social carnival को as a comedy समझो. This is an option to your alienated cynicism, right? So there is another alternative to this. This looks okay. Society is essentially a tragicomedy. ट्रैजिक तो नहीं बोल रहा है, कॉमेडी जरूर बोल रहा है. तो ट्रैजिक कॉमेडी कहां से आएगा? If one views society as a comedy, one will not hesitate to cheat. Okay, this is a wrong interpretation. Cynicism is nothing more than credulous conformity. Okay. A is the correct answer. All right, let's go to the second passage. Mathematics has been called the language of the universe. Scientists and engineers often speak of the elegance of mathematics when describing physical reality, citing examples such as pi equals to mc square, even something as simple as using abstract integers to count real-world objects. Yet, while these examples demonstrate how useful maths can be for us, does it mean that physical world naturally follows the rules of mathematics as its mother tongue, and that this mathematics has its own existence that is out there waiting to be discovered? This point of view on the nature of the relationship between maths and physical world is called Platonism, but not everyone agrees with it. What does this paragraph tell you? So it tells us that there is a question that whether physical world follows the rules of mathematics and whether mathematics has its own existence out there waiting to be discovered. ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको प्लेटोनिज्म कहता है, राइट? सो क्या फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज होते हैं वो मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, और क्या मैथमेटिक्स की एक एग्जिस्टेंस है अपने आप में दैट इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड. इस ये जो व्यूज हैं, ठीक है, दिस काइंड ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑन नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैथ्स एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड प्लेटोनिज्म. सो प्लेटोनिज्म सेज दैट फिजिकल वर्ल्ड के जो रूल्स हैं वो फिजिकल वर्ल्ड जो है वो मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करती है, और दूसरा ये कि मैथमेटिक्स की अपनी आप एक एग्जिस्टेंस है वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड. सो इसको हम कहते हैं प्लेटोनिज्म. लेकिन हर आदमी इससे एग्री नहीं करता. डेरिक एबर्ट जो है, ये एक प्रोफेसर है, ये ओके, ही हैज रिटन अ पर्सपेक्टिव पीस टू बी पब्लिश्ड इन दिस, इन व्हिच ही आर्ग्यूज दैट मैथमेटिकल प्लेटोनिज्म इज एन इनएक्यूरेट व्यू ऑफ रियलिटी. वो इस चीज को इनएक्यूरेट व्यू मानते हैं. इंस्टेड ही आर्ग्यूज फॉर द ऑपोजिंग व्यू पॉइंट, the non-Platonist notion that mathematics is a product of human imagination that we tailor to describe reality. So अब यहाँ पे डेरिक एबर्ट जो हैं वो कहते हैं कि ये एक inaccurate view है, rather it is the opposite that is true.
and it is called non-Platonist notion that mathematics is not out there in the world waiting to be discovered, having its own existence. Rather, mathematics is a product of human imagination, and we tailor to describe reality. That means we fit these mathematical concepts to describe reality. So physical world does not follow the rules of mathematics as per non-Platonists. Rather, mathematics is tailored to the physical world to whatever extent we can. And mathematics is a product of human imagination, whereas Platonists say that mathematics has its own existence. तो इस तरह से ये दो आपको प्लैटोनिस्ट और नॉन प्लैटोनिस्ट नोशन बता गए, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ. This argument is not new. In fact, Abbott estimates through his own experiences in an admittedly non-scientific survey that while 80% of mathematicians lean towards a Platonist view, engineers by large are non-Platonists. So ये कह रहा है कि एक उसने सर्वे किया है और उसमें 80% मैथमेटिशियंस जो हैं वो प्लैटोनिस्ट है व्यू उनका, लेकिन इंजीनियर्स जो हैं ज्यादातर वो नॉन प्लैटोनिस्ट. फिजिसिस्ट टेंड टू बी क्लोजेटेड नॉन प्लैटोनिस्ट. क्लोजेटेड मतलब क्या होता है? देखो, क्लोजेट मतलब क्या होता है? क्लोजेट मीन्स जो आपकी कबर्ड होती है. तो अगर आप क्लोजेटेड नॉन प्लैटोनिस्ट है तो मतलब आप छुपे हुए, दैट मीन्स कि आप क्लोजेट के अंदर नॉन प्लैटोनिस्ट हो. मतलब आप के जो बिलीफ है वो नॉन प्लैटोनिस्ट वाले हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं है. पब्लिक के लिए कोई दूसरा फेज है. ओके, तो ये जो क्लोजेटेड वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है. अंदर से तो आपके व्यूज नॉन प्लैटोनिस्ट है. सो ही सेज मीनिंग दे ऑफन अपीयर प्लैटोनिस्ट इन पब्लिक, लेकिन बाहर आप प्लैटोनिस्ट. जैसे आपसे मीडिया में कोई पूछेगा या आपसे कहीं पे और कोई व्यू पूछेगा तो आप बोलोगे मैं तो प्लैटोनिस्ट हूँ, लेकिन अंदर जब आप रहोगे घर के तो आप, या क्लोज्ड सोसाइटी जो आपकी रहेगी उसके अंदर आप क्लोजेटेड, तो उसमें आप नॉन प्लैटोनिस्ट. बट व्हेन प्रेज्ड इन प्राइवेट ही सेज he can often extract a non-Platonist confession. So यहाँ पे इसमें थर्ड पैराग्राफ में इसने बताया कि मोस्टली मैथमेटिशियन 80% प्लैटनिस्ट होते हैं, लेकिन इंजीनियर्स मोस्टली नॉन प्लैटनिस्ट होते हैं. और फिजिसिस्ट जो होते हैं ये क्लोजेटेड नॉन प्लैटनिस्ट हैं. मतलब ये प्राइवेट में तो नॉन प्लैटनिस्ट हैं लेकिन पब्लिक के अंदर प्लैटनिस्ट. So if mathematicians, engineers and physicists can all manage to perform their work despite differences in opinion on this philosophical subject, why does the true nature of mathematics in its relation to the physical world really matter? तो अब देखो, काम तो सभी का चल रहा है. मैथमेटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स अपना काम कर रहे हैं, फिजिसिस्ट अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके सबके अंदर डिफरेंसेस इन ओपिनियन भी हो रही है. तो फिर ये जो मैथमेटिक्स का नेचर है, इससे इससे क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट रियली मैटर? द रीजन से इज दैट बिकॉज व्हेन यू रिकॉग्नाइज दैट मैथ्स इज जस्ट अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, just an approximation of reality that has its frailties and limitations, and that will break down at some point, because perfect mathematical forms do not exist in the physical universe. Then you can see how ineffective maths is. तो कह नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि मैथ्स एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, मतलब आपकी इमेजिनेशन में है मैथ्स, एंड इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियलिटी, और उसके अंदर फ्रेलिटीज मतलब कमियां हैं उसकी. ओके, वीक है वो. फ्रेल मीन्स वीक. ओके, उसकी अपनी वीकनेसेस होती हैं, उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं, और वो एक टाइम पे ब्रेक डाउन हो जाएगी क्योंकि परफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते फिजिकल यूनिवर्स में. तब आपको समझ में आएगा कि मैथ्स कितनी इनइफेक्टिव. And that is Abbott's main point and most controversial one, that mathematics is not exceptionally good at describing reality, and definitely not the miracle that some scientists have marveled at. Einstein, a mathematical non-Platonist, was one scientist who marveled at the power of mathematics. He asked, how can it be that mathematics, being after all a product of human thought, which is independent of experience, is so admirably appropriate to the objects of reality? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैथमेटिक्स is not good at describing reality, और डेफिनेटली वो मिरेकल तो है ही नहीं जो साइंटिस्ट कहते हैं इसको. आइंस्टाइन इज अ मैथमेटिकल नॉन प्लैटनिस्ट, लेकिन ये एक साइंटिस्ट जो मैथमेटिक्स की पावर के ऊपर वंडर करता है. ही वंडर्स एट द पावर ऑफ मैथमेटिक्स, एंड ही सेज दैट कि बीइंग आफ्टर ऑल, डिस्पाइट बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन थॉट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज सो एडमिरेबली अप्रोप्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ रियलिटी. तो इसको नॉन प्लैटनिस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि डिस्पाइट बीइंग ऑ स्ट्रक और वंडर स्ट्रक बाय मैथमेटिक्स, ही स्टिल थिंक्स दैट mathematics is a product of human thought, whereas Platonists think that mathematics has its own existence. So that's why Einstein is a non-Platonist, and yet he marvels at the power of mathematics. In 1959, the physician and mathematician Eugene Wigner described this problem as the unreasonable effectiveness of mathematics. That means we don't even expect, but still it is effective. That is, it is unreasonable, but it is effective. In response, Abbott's paper is called the reasonable ineffectiveness of mathematics. That means कि there is a fair degree of ineffectiveness in mathematics. तो दोनों approaches opposite हैं. Both viewpoints are based on non-Platonist idea that math is a human invention.
दोनों जो है वो नॉन प्लेटनिस्ट आइडिया के ऊपर ही हैं, बट वेयर एज विग्नर एंड आइंस्टाइन माइट बी कंसिडर्ड मैथमेटिकल ऑप्टिमिस्ट्स who noticed all the ways that mathematics closely describes reality. Abbott pessimistically points out that these mathematical models always fall short. तो विग्नर और आइंस्टाइन को आप भले ही मैथमेटिकल ऑप्टिमिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने नोटिस किया किस वेज में मैथमेटिक्स क्लोजली डिस्क्राइब करती है रियलिटी, लेकिन एबट जो है वो कहता है कि मैथमेटिकल मॉडल ऑलवेज फॉल शॉर्ट. What exactly does effective mathematics look like? Abbott explained that effective mathematics provide compact, idealized representation of the inherent noisy physical world. तो effective mathematics जो होती है ये idealized representation बताती है. That means it's not the way it is an idealized representation जैसा होना चाहिए of an inherently noisy physical world. Or I argue that there are many more cases where maths is ineffective than when it is effective. Maths is only the illusion of being effective when we focus on successful examples. So अब ये एक bias है. Okay, there is a fallacy in our thinking that if we focus only on the successful examples, then we will tend to think that mathematics is very effective. Okay, suppose there are 100 cases. Now, in 20 cases, mathematics is effective. And if we focus only on those 20 cases, then we will definitely end up saying that mathematics is very effective. But he's saying that we should look at everything. Okay, we should not focus only on the successful examples. So this is a bias here. Okay, there's a bias, there's a fallacy here, that if you focus only on the successful examples, then you might end up saying that this is very useful or very effective. जैसे simple example है, अगर if there are 100 students, okay, out of which 20 have gone to A institute and got a 99.9 percentile, and we are looking at only those 20 students, and we make a claim that this institute is very, very effective because these 20 people went there and got 99.99 percentile. We are only looking at those successful examples and trying to support our point. Whereas, what about those 80 people who also went there but did not succeed? So this is something like that. But our successful examples perhaps apply only to a tiny portion of all the possible questions we could ask about the universe. So he's saying that whatever tiny portion of possible questions you ask, their mathematics may be successful. And then you are kind of making or drawing a conclusion that mathematics very effectively represents the physical world. So this only has the illusion of being it. Right? So यहाँ पे इस passage में just to sum it up, they talked about Platonic and non-Platonic views. Platonic views वाले कहते हैं कि मैथमेटिकल फिजिकल लॉज जो है वो फिजिकल वर्ल्ड जो है वो मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करती है और मैथमेटिक्स की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. नॉन प्लैटनिक वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इन्वेंशन, ह्यूमन माइंड, एंड दे समहाउ टेलर इट टू फिट द रियलिटी. एंड मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर नॉन प्लैटनिक. Einstein was a mathematical optimist, but he also thought that it was a product of human invention, human imagination. And then Wigner और इन्होंने एबट के बीच में डिफरेंस बताया कि विग्नर यूज्ड टू टॉक अबाउट द रीजनेबल unreasonable effectiveness. That means he focused more on the effectiveness of mathematics, and whereas Abbott focused on the ineffectiveness. And Abbott said that there is a bias because we look only at the successful examples. But if we look at the entire set of problems that could be there in the universe, then this mathematics being able to represent those is an illusion. So that's the passage. Let's go to the question. According to the passage, what is the difference between Platonism and non-Platonism with respect to mathematics? Platonism posits that mathematics dictates the rule that physical world follows, whereas non-Platonism states that mathematics is independent of the physical world. तो ये तो गलत है. Non-Platonist ये थोड़ी कहते हैं कि mathematics is independent. They are saying that mathematics is a product of human imagination. It doesn't exist on its own. Okay, it doesn't exist independently. Okay, ये तो is the product of human mind. Right? यहाँ पे ये अगर देखेंगे हम कि ये प्लेटनिस्ट कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स की इट्स ओन एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. ओके, ये नॉन प्लेटनिस्ट नहीं कह रहे, तो इसलिए ये गलत हो गया. अकॉर्डिंग टू प्लेटनिज्म, सी ये ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट वाज ओके, पोजिट्स दैट मैथमेटिक्स डिक्टेट्स द रूल दैट फिजिकल वर्ल्ड फॉलो. दिस फाइन, दिस इज ओके, ठीक है, ये पार्ट ठीक था, लेकिन ये वाला पार्ट गलत है. अकॉर्डिंग टू प्लेटनिज्म द फिजिकल वर्ल्ड फॉलोज द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो ठीक है ये वाला पार्ट.
whereas according to non-Platonism mathematical rules are tailored to fit the physical world. Yes, ये कह रहा है ना यहाँ पे कि mathematical views is a product of human imagination that we tailor to describe reality. So this looks okay. इसको अभी रख लेते हैं. Platonism states that mathematics and physical world cannot exist without each other, whereas non-Platonism states that mathematical and physical world can exist independent of each other. So this is all again, ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि they cannot exist without each other, ऐसा भी नहीं बोल रहा, और ये भी नहीं बोल रहा है कि they can exist independent, तो ये भी गलत है. This is wrong. Platonism is an inaccurate view. कि यहाँ पे ऑथर ने जजमेंट नहीं दिया है कि ऑथर प्लैटनिस्ट है कि नॉन प्लैटनिस्ट है, whether this is an accurate view or this is inaccurate view. He has just described both the views. He has not given his judgment. Therefore, this is wrong. B is the right answer. Which of the following, if true, can explain the inclination of some physicists to be closeted non-Platonist? So closeted non-Platonist हमने देखा था, जो प्राइवेट में नॉन प्लैटनिस्ट है लेकिन पब्लिक में वो प्लैटनिस्ट बन जाते. सो ऐसा हम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द इंक्लिनेशन, तो ऐसा ये जो कुछ फिजिसिस्ट जो ऐसा करते हैं, जो पब्लिक में प्लैटनिस्ट होते हैं और प्राइवेट में नॉन प्लैटनिस्ट, तो ये क्यों करते हैं ऐसे? नॉन प्लैटनिज्म इज कंसिडर्ड अ मोर पॉपुलर ओपिनियन एज कंपेयर टू प्लैटनिज्म. अगर ऐसा है तो फिर उन्हें छुप के नॉन प्लैटनिस्ट बनने की क्या जरूरत है? इफ नॉन प्लैटनिज्म इज कंसिडर्ड मोर पॉपुलर, देन व्हाई आर दे क्लोजेटेड नॉन प्लैटनिस्ट? अगर आप सपोज करो 80% पीपल फेवर समथिंग एंड यू आर अमंग दोज, देन व्हाई वुड यू हाइड दैट? It is just that you are in that 20% and you want to hide the fact, you want to be seen as confirming to the 80%, then you are a closeted non-Platonist. तो ये तो गलत है, ये उल्टा है. Platonism is held in higher regard among physicists as compared to non-Platonism. Yes, अगर प्लेटोनिज्म वालों को ज्यादा हायर रिगार्ड में रखा जाता है और आप नॉन प्लेटनिस्ट हो तो आप चुप रहोगे, राइट? आप अपने व्यूज प्राइवेट रखोगे. ओके, सिंपल सी बात है. जैसे अगर सपोज करो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए और बी. अब 80% लोग ए को फॉलो करते हैं, 20% बी को. और अगर कोई आदमी बी का बिलीवर है लेकिन उसको लगता है कि अगर मैं पब्लिकली बोलूंगा कि मैं बी को बिलीव करता हूँ तो मेरी थोड़ी सी इज्जत कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? अंदर ही अंदर तो वो बी को सपोर्ट करेगा, लेकिन पब्लिक में अगर कोई पूछेगा तो वो ए को सपोर्ट करेगा. वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो ए का सपोर्ट करूँ. ठीक है, अंदर ही अंदर वो वोट चाहे जाके बी को दे दे. तो दिस इज सो व्हाई? बिकॉज प्लैटनिज्म इज हेल्ड इन अ हायर लेवल. दिस लुक्स ओके. मैथमेटिकल प्लैटनिज्म एक्सप्लेन्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स, वेयरएज नॉन प्लैटनिज्म, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं बोल रहा है कि which one explains most of the problems, which one does not. The number of physicists who actively argue for non-Platonism is greater as compared to those. ये भी नहीं बताया है कि नंबर ऑफ फिजिसिस्ट जो हैं वो नॉन प्लैटनिज्म के कितने आर्ग्यू करते हैं और ये कितने आर्ग्यू करते हैं, तो ये भी गलत है. करेक्ट आंसर इज बी. According to the passage, what is the difference between the views of Derek Abbott and Eugene Wigner regarding mathematics? तो डेरेक एबट क्या कहते थे? उन्होंने कहा था रीजनेबल इनइफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स, और यूजीन विग्नर ने क्या कहा था? अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? सो व्हाइल एबट वाज अ नॉन प्लैटनिस्ट, विग्नर वाज अ प्लैटनिस्ट. बिल्कुल गलत है. दोनों के दोनों नॉन प्लैटनिस्ट थे, राइट? ये यहाँ पे इन्होंने कई जगह पे बताया भी हुआ कि आइंस्टाइन भी था और विग्नर जो था, ठीक है, आइंस्टाइन एंड विग्नर माइट बी कंसिडर्ड मैथमेटिकल ऑप्टिमिस्ट who noticed all the ways mathematics closely resemble. So both viewpoints अब देखो यूजीन विग्नर का जो है कि अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस और इसका रीजनेबल, बोथ व्यू पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन नॉन प्लैटनिस्ट, राइट? सो देयरफॉर वी कांट से दैट कि एबट वाज अ नॉन प्लैटनिस्ट एंड विग्नर वाज अ प्लैटनिस्ट. तो ये गलत है. एबट स्टडीड द वेज इन विच मैथमेटिक्स क्लोजली डिस्क्राइब रियलिटी, whereas Wigner studied the ways in which mathematics was not able to describe reality. ये exactly opposite बोल रहा है. एबट ने वो स्टडी किया वेज जिसमें मैथमेटिक्स ने डिस्क्राइब नहीं किया रियलिटी को, और विग्नर ने किया जिसमें कि उसने डिस्क्राइब किया रियलिटी को, राइट? सो ये बिल्कुल ही उल्टा किया गया है. ओके, ठीक है. देयर आर मेनी मोर केसेस वेयर मैथ्स इज इनइफेक्टिव देन व्हेन इट इज इफेक्टिव. तो उसने बेसिकली जहां पे वो एप्लीकेबल नहीं है वो स्टडी की है, ठीक है. द अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ये किया विग्नर ने, और रीजनेबल इनइफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स तो ये किया एबट ने, राइट? तो एबट ने ये नहीं किया, उल्टा किया, और विग्नर ने भी उल्टा किया जो इसमें लिखा हुआ है. तो दोनों ये गलत है. वेल, एबट वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ इफेक्टिव, वाज द फर्स्ट टू स्टडी. ये बिल्कुल गलत है. Wigner studies how effective mathematics was in describing reality, whereas Abbott concentrated on how ineffective mathematics was in describing reality. This looks to be the correct answer.
Which of the following would best illustrate the illusion of effectiveness of mathematics mentioned in the last paragraph? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बायस है यहाँ पे कि आप सिर्फ सक्सेसफुल एग्जांपल्स पे फोकस करके अपना कंक्लूजन निकाल दो, राइट? सो दैट इज नॉट अ करेक्ट कंक्लूजन, दैट्स एन इल्यूजन, दैट्स व्हाट ही सेड. तो इसको एक बायस कहते हैं. कौन सा बायस है? चॉइस सपोर्टिव बायस, द टेंडेंसी टू रिमेंबर वंस चॉइसेस एज बेटर देन दे एक्चुअली वर. यहाँ पे चॉइस नहीं है, देयर इज नो मेंशन ऑफ one having to choose between two. So this is wrong. Continued influence effect, the tendency to believe previously learned misinformation even after it has been corrected. तो यहाँ पे ऐसा है नहीं कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपने बिलीव कर ली और आप उसको कंटिन्यू किए जा रहे हो, तो ये भी गलत है. Survival bias, logical error of concentrating only on successes and ignoring failures. Yes, this is called survival bias. You are only focusing on successes. Focusing effect, tendency to place too much importance on one aspect of an event. ऐसा भी नहीं है. Correct answer is C, survival bias. So I hope the passage and the questions are clear and the answers. Thank you.